Hello everyone, hope you are doing great in your life. I am Shubham Batra, a CA finalist, and I am going to explain you about the topic, basically the difference between Section 115 BSc earlier versus Section 115 BSc under the Finance Act 2023. Before knowing the differences, let us know about when it was introduced. Section 115 BSc was introduced firstly under the Finance Act 2020. Then it has been amended under the Finance Act 2023. This was for individuals and HUF. The first change is about change in the slab rates. पहले क्या होता था बिफोर द फाइनेंस एक्ट 2023 अब टैक्सेबिलिटी कैसे होती थी अप टू 2.5 लाख नील more than 2.5 lakh to 5 lakh 5%, more than 5 lakh to 7.5 lakh 10%, and so on. अब क्या हुआ आफ्टर द अमेंडमेंट इन द फाइनेंस एक्ट 2023 अप टू 3 lakh nil rate, more than 3 lakh to 6 lakh 5%, more than 6 lakh to 9 lakh 10%, more than 9 lakh to 12 lakh 15%, and so on. इसमें मेन फर्क क्या पड़ा जो बेसिक एग्जामिशन लिमिट्स थी वो 2.5 लाख से 3 लाख हो गई एंड जो पहले 2.5 लाख का डिफरेंस होता था वो अब 3 लाख का डिफरेंस हो गया. The second change is about the standard deduction which was not available under the section 115 BSc earlier जो कि अब अवेलेबल है after the amendment in the finance act. standard deduction अवेलेबल है. Apart from that they can also claim the deduction under the section 80 CCD subsection 2 of Income Tax Act 1961. And the third change is about the highest surcharge rate which was 37% earlier. Now after amendment it has been reduced to 25%. इससे क्या हुआ कि हमारी ओवरऑल टैक्सेबिलिटी रिड्यूस हो गई. कैसे पहले मैक्सिमम रेट था 30% प्लस सरचार्ज 37% प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज इक्वल टू 42.744%. अब क्या हुआ मैक्सिमम रेट इज 30% प्लस 25% सरचार्ज मैक्सिमम प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज इक्वल टू 39%. हो गई ओवरऑल टैक्सेबिलिटी रिड्यूस 42.744% टू 39%. एंड द फोर्थ चेंज is about the rebate. There are 2 points for the rebate, and rebate was available under section 87A for those individuals whose income is up to rupees 5 lakh. This was earlier before the Finance Act 2023. Now after amendment rebate is available for those individuals having income up to rupees 7 lakh. 5 lakh से 7 lakh लिमिट इंक्रीज कर दी गई है. रिबेट का सेकंड पॉइंट पहले थी रिबेट 12,500 अलाउड अब हो गई है 25,000 मतलब कि 12,500 का इंक्रीज हो गया हाइक हो गई जिससे इंडिविजुअल्स को बेनिफिट हुआ. एंड द नेक्स्ट चेंज इज अबाउट डिफॉल्ट और ऑप्शनल. बेसिकली पहले क्या होता था जो ओल्ड स्कीम थी दैट वाज डिफॉल्ट ओल्ड स्कीम ऑफ टैक्सेशन and new scheme was the optional. Between April 2020 to March 2023 the new regime was optional until unless कोई स्पेसिफाई नहीं करता था कि मैंने न्यू स्कीम में टैक्सेबिलिटी चाहिए मुझे. अब क्या हो गया आफ्टर अमेंडमेंट जो न्यू regime है वो डिफ़ॉल्ट कर दी गई है until unless कोई एम्प्लॉय स्पेसिफाई नहीं करेगा कि वो ओल्ड regime में टैक्सेबिलिटी चाहता है. And the last change which is about the marginal relief which has been introduced under the new regime. It was earlier पहले क्या होता था कि it marginal relief was available for individuals having income exceeding rupees 50 lakhs. Now after amendment marginal relief is available for those individuals having income marginally exceeding rupees 7 lakh. And this was all about this topic. I hope you get the understanding of this topic. Thank you. This is Shubham Batra signing out till we meet again. For more tax updates, follow Tax Infotainment. Thank you.